So today we are going to cover the modeling concept. Okay. So we have Okay, sir. installation part, Power BI possible error. This application overview. Hope you understood the Power BI and all applications name like report builder and all that already cover everything. So just revise it for within 10 minutes so that you can understand. This is the report builder. It is going to help you to build the report look like it's a totally SSRS based concept. Only one additional thing which is it is allow you to link with the Power BI cloud. That's it. This additional part we have. So like how should you do that? By clicking add source, go to connections. Before check this option, you must log in with your credential that Power BI cloud has. Okay, so must log in it so that you can able to access your workspace, and then select the database, whatever workspace you have, and then you can do that. Okay. Next up to transport data. This is for primary needed for the usually it's a need for the on-premises data sources like SQL flat files. Uh, we can say a database which have in the company own setup. So that time gateway is needed. So this is the gateway. You just download from the portal, enterprise gateway, and install it, configure it. It is already very simple process. And third application which is called Power BI Cloud. So that I will complete f.powerbi.com. Now it's going to change, and which is called, so let you understand. Then in the last 2-3 session I'll cover what is a fabric is. So fabric totally different concept, and the Power BI, but yeah, it's a totally interrelated. Okay, sir. Changing the name Power BI Microsoft Fabric. So slowly, gradually, they will completely move on the Power BI prospect. So talk about recently I created the video. If you get a time, so you can please watch Power BI Fabric. I'm creating stage by video doing sequence. I'm going to create that. So here I have my, once you go to the buildfuturelab.com, here we have a playlist. In playlist we have Fab. So yeah, you can understand easily. Let's move to the concept of application navigation. I understand that Power BI application navigation is required. So today we are going to work on navigation part, because major part is Power BI desktop where we develop the report. Okay, go ahead, you're asking some question here. Do you have any question, Sika? रिगार्डिंग द प्रीवियस वन ना सर, एक्चुअली मैंने अभी ना लास्ट की 2 वीडियो कंप्लीट की हैं, थर्ड वाली रहती है वो नेक्स्ट वीकेंड डिस्कस करूंगी, फिर अभी तो नहीं है कोई तो क्वेश्चन। जैसे ना आप क्या करो कि जैसे आपने पढ़ा उसको, ठीक है, सो लाइक वी हैव 2, 3, 4 क्वेश्चंस. ओके, सो जस्ट जॉट डाउन द क्वेश्चन. When we are to get together, just ask your question so that you can we can say I'm able to answer your question. So that's the reason. Let's move to the these are the options that we have. It's very basic. So here I have the visual part, and all visual that Power BI, any charts we have, Power BI is available here. Okay, also you can get it here too. So I told you there are 2 options. Either you can enable here, or if you don't want to enable it, select from here too. And the best part is that whatever option you click in the report page, it will automatically highlighted here like Excel did, and you can select this option. Like, so if I select publish, once you've done it, just publish it here. Then if you wanted to insert any image and all, so here I have a text box. Like you wanted to create the header, then use the text box. Buttons we have, like you're looking for the any button specific, left, right, back, information, Q&A, so that kind of option is there. Shapes, sometime we create the report, so we need the shape, so that also these are options are available. And if you don't have find this option, you can also import from any image that you have, so you can import it too. This facility also there, just customize image as per your need. Okay, so we are doing later on, not right now. So let's delete this one. To delete it, remove this one. Next,
insert pass modeling. If you are obviously model data, sometime need to create the new measure. Measure means calculated field. Quick measure, sometime you don't know the formula, then quick measure going to help you. Then new column, new table, and change parameter. These options we are going to use it. This is manage role is going to help you while creating the rollable security. View, you know that sometime we need to color and all, so that have a theme. In if you have a specific theme, you can use here too. And then page. सर मॉडलिंग का जो है यहाँ पर टैब मॉडल का व्यू यहाँ भी है ना, रिपोर्ट, टेबल व्यू एंड मॉडल व्यू, राइट? हाँ, रिपोर्ट, टेबल व्यू, थर्ड, हाँ, रिपोर्ट, टेबल व्यू, मॉडल व्यू और टेक्स्ट, राइट? हाँ, मॉडलिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी है, राइट? मैं रिपोर्ट व्यू ये बता रहा हूँ, इसका डिफरेंस क्या, अभी आते हैं वहाँ पे तो बताते हैं आपको, ठीक है। सो पहले आते हैं यहाँ पे, ऑप्शन चेंज होगा सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। व्यू में ये हो गया आपके सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शंस, और जितने भी पेन है आपको इसी में मिलेंगे। विजुअल हो गया, बिल्ड विजुअल से सारी चीज़ें आपको इसी में मिलेंगी। सारा आपको फिल्टर पेन, आप चाहो तो किसी भी ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो, फिल्टर हटा सकते हो, सब यहीं पे व्यू में, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि वी नीड टू फिक्स दी we can say page size, like visual wanted to fit it, so this way we can whatever fits for you, you can select as per your need. Sometimes we need to create a mobile layout. Some customer said I wanted to only use mobile layout only, so you can do that as well, okay, but not always. And you know, if you created any visual here, you don't want to move, just lock object, snap grid lines, you can do that too. So that kind of option is there, okay. Next, optimization. You know, sometimes we getting a problem, not able to refresh some, maybe I wanted to enhance the performance of my report, so that part I'm going to push visual, refresh visual, optimization, so performance analysis apply also. So this kind of thing we can use and explore that. Then we have the you know, there are many options available, like I wanted to learn, so here I have a Power BI learning concept here about this product, wanted to know, so click here and you get the product information. And then we have a training video, so I haven't used that, maybe it's going to connect with the Google, YouTube, I think so. Documentation, yeah, this is very important. You can click here and always go to check documentation too. You have already link pasted in your notepad. Then be a support. See, without license Microsoft is not supporting, but yeah, if you're looking for support, so you can go and check it out, create your request. सर ये जो लिंक है वो किस लिए यूज होता है जो आपने अभी बताया? ये डॉक्यूमेंटेशन वाला, अच्छा, ओके। डॉक्यूमेंट में पढ़ना होता है, जैसे अपडेट्स आती है, यू मस्ट रीड। जब तक आप मेरे साथ तब तक डोंट वरी, बट लेटर यू शुड फॉलो दिस पावर बी डॉक्यूमेंटेशन। और वीडियोस वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी ट्रेनिंग वीडियोस में? नहीं, ये तो नहीं पता मुझे, यूट्यूब पे शायद ले जाता है, लेट मी चेक। माइक्रोसॉफ्ट का अपना यूट्यूब का चैनल है, हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का अपना चैनल है, सो यहाँ पे जाके अपडेट्स, वो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, वो वीडियोस में आ जाती होंगी। आ जाती है यहाँ पे यूजुअली। और अच्छा, बहुत ही, मतलब अभी मैंने यहाँ पे एक भी वीडियो छोड़ी नहीं है मैं हर जैसे आता उसी दिन देख डालता हूँ उसको, और उसको ये तो गुड। और गाइडेड लर्निंग में सारे वो मतलब बताते होंगे कहाँ पर क्या है? नहीं, मेरा जो मेन फोकस है सपोर्ट पे। क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं दैट वी आर अनेबल टू सॉल्व दैट, चाहे कोई आइडिया हो, तो यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, सपोर्ट में जाके देख लो, ऑप्शन मिल जाए ठीक है, नहीं है तो सपोर्ट सबमिट एन आइडिया, आप एक आइडिया सबमिट कर दो। जैसे लोग क्या करते हैं ना, आप देखोगी पहले जब इनिशियल फेज में 2015 में, तो सारे स्ट्रिंग से कनेक्ट होते थे, अब सारे ऑप्शंस आ गए, क्योंकि पीपल आर गिविंग आइडिया। ये देखो, इन्होंने पेज में टैब सिक्योरिटी चाहिए इनको, सो एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, रिव्यू में चला गया, ये सारे पीपल गिविंग सजेशंस, तो उसके अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट उस पर रिएक्ट करता है। जितने वोट आते हैं, देखो इन पे हाई वोट आए हैं अभी तक। हाँ, तो अंडर रिव्यू है सारे। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से कंटिन्यू वर्क कर रहे थे, पूरी प्रॉपर टीम है इसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, दे आर गोइंग टू वर्क इनटू इट, ओके। सो आइडियाज आते रहते हैं, दे गोइंग टू इम्प्लीमेंट इनटू इट, ओके। दीज आर दी लिव एज इट इज एक्सटर्नल टूल। जो भी आपके पावर BI सपोर्टेड टूल्स हैं, ये बस आपको नेम याद होना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा, डोंट वरी। सो लेट मी गिव द नेम sqlbi.com। इसमें मैंने भी इंस्टॉल नहीं किया, आपका वेट कर रहा हूँ। सो पहला टूल है, इसमें टूल पे आते हैं,
पहला ब्रावो। जैसे आपको क्या होता है कभी कभी यू डोंट नो हाउ टू फॉर्मेट द डैक्स, so that is going to help you. Okay, so I'll paste the link in the we can say chat, sorry, in the notepad, so you can do that, don't worry. So when website is that I'm a premium customer of this, so I can download. I think you can download that. There's no policy for it. See, go to here and page install in your system. This is required. ये ब्रेवो क्या है? ब्रेवो डैक्स फॉर्मेटिंग टूल है एक तरह का। अच्छा अच्छा। हाँ, that going to help you. तो वहां पर लिंक दिया हुआ है डायरेक्टली, और यू आर सर्चिंग हियर ओनली? So they send it to here to download that. वो जो लिंक पे क्लिक करो it come to the GitHub. जनरल वेबसाइट है ना, they are not following, they don't have own cloud, so they are. अच्छा, फिर वापस से एक बार जाना पावर बीआई की हेल्प पे। अच्छा, यहाँ पे हेल्प। हाँ, अच्छा, एक्सटर्नल टूल में था ये, एक्सटर्नल टूल में ओपन हुआ राइट ब्रेवो? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने अलग से टाइप किया है। ओके। ये एक्सटर्नल टूल में आता है, बट तो ये मेरा टूल है, इसको हमें कुछ नहीं, सिंपल जाके इंस्टॉल कर लें। एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं? बहुत सारे टूल है, अभी जो फिलहाल के लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ। एएलएम टूल है, बहुत सारे टूल है, मैं आपको नेम सब दे दूंगा, सब धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे जैसे जाता जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये है, बिकॉज इसकी जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि डैक्स फॉर्मेटिंग के लिए कभी कभी जो पीपल यू आर ए न्यू, सो क्या होगा कि यू क्रिएटेड दैट यू गेटिंग सम एरर, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अभी आपको एडवांस लेवल पे काम नहीं करना है, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए बताया है आपको टूल। बस नेम पता होना चाहिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब माइक्रोसॉफ्ट ने इनहेंस कर दिया चीज़ों को, ये टूल ऑलरेडी उसने इंटीग्रेट कर दिया है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लिंक कर दिया है उसको। ठीक है सर। इधर क्यों आ रहा है? ठीक हो जाएगा बाद में। अच्छा, और भी टूल है, जैसे कि एएलएम टूल है, वो क्या करता है कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हम डाउनलोड नहीं कर सकते पावर बीआई रिपोर्ट को क्लाउड से, तो वो वहाँ पे काम करता है। ठीक है, विल लेट यू नो। ओके, सो दिस इज एएलएम टूल, अरे दिस इज दी ब्राउज़र टूल। कोई डेस्कटॉप रिपोर्ट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी इससे, और आप उसको यूज कर सकती हो। अब हो गया वर्टीपैक इंजन। ये सारे लिंक मैं आपको डाल दूंगा, कुछ करना नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, डोंट वरी। आपको जो भी डॉक्यूमेंट देगा एसक्यूएल, वो सारे आपके इसमें रहेंगे। आप उसको जैसे ट्रेनिंग खत्म होंगे ना, तो आप उसको अपने पास डाउनलोड करके रख लेना। देन नेक्स्ट टूल आ जाइए, विच इज कॉल्ड डेक्स स्टूडियो। ये क्या करता है कि कभी कभी हमने जो रिपोर्ट बनाई, अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंटीग्रेट ही कर दिया डायरेक्टली पावर बीआई में ही, तो बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। बट हाँ, तो मुझे देनी है ना सब, तो ऐसे आप जाओगे यहाँ से। देखिए, आपको ये इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पता क्या होता है, जिस दिन आप प्रॉब्लम में आओगी उस दिन आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। तो ये आप खाली आपको हम बता देंगे ना, जिस दिन जब प्रॉब्लम आओगी तो ऑटोमेटिकली आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे, बस आपको पता होना चाहिए चीज़ें। ओके। हाँ, सो ये चीज़ें आपको, जैसे अदर इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, बस वो बेसिक पढ़ाई खत्म करेंगे, वो कभी नहीं बताएंगे इस टूल के बारे में। ये मुझे बहुत ड्रैक्स के लिए वेबसाइट है, मैं आपको जैसे, तो वो क्या करती है, ड्रैक्स के लिए बंदे ने बुक लिख रखी है बहुत अच्छी अच्छी, और ट्रेनिंग भी देते हैं ये। इनकी कॉस्टिंग अभी आपने डिस्कस किया, एक तो ब्रेवो टूल किया और डेक्स एक डेक्स स्टूडियो। स्टूडियो, हाँ, दो डिस्कस किए। दो ठीक, दो ही बस आप यूज करो। ब्रेवो में आपने बोला कि उच्च एडवांस फंक्शनैलिटी होती है, तो डैक्स डेक्स तो मॉडिफिकेशन के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग, ओनली फॉर फॉर्मेटिंग। ओके, फॉर्मेटिंग के लिए तो डेक्स स्टूडियो फॉर यूज फॉर यूज फॉर डैक्स को, डैक्स में ना ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेनली यूज होता है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। डैक्स सर एक और चीज, हम गूगल पे जाके टाइप कर दें डेक्स या ब्रेवो, वहां से हम डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें, राइट? हाँ बिल्कुल, बट एसक्यूएल बीआई से डायरेक्ट लिंक होता है तो सिक्योर रहता, बस यही है। अब देखिए, ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास जो मॉडल है,
मुझे कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको पता है कि कैसे क्वेरी लिखनी है, तो यहाँ से आके वो उस क्वेरी को देख लेते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, वो चेक करके उस क्वेरी को मोड़ लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये रहेगा, तो आपको ये हेल्प करता है कि आप कैसे जो 10 लाइन का कोड है उसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, आपको आइडिया देगा। तो बस यही है, इसी टूल की इतना ही काम है। जो आप 10 लाइन का कोड है, हाउ शुड राइट इन 1 लाइन, मे बी 2 लाइन, तो दैट गोइंग टू टेक less calculation and performance going to enhance. Ultimate objective है। Okay, two application Bebo and Dax Studio. Let's move to the next part. Formula bar. Formula bar Power BI में आपके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल मेजर है। यानी जब आप लोड करते हैं, पहले मैं सिंपल डेटा लोड करता हूँ यहाँ पे। सो मैं पहले इसको सेव करता हूँ। अच्छा है तो क्रिएट तो कर ही रखा है मैंने, फाइल क्यों नहीं बनानी। मेरे पास थोड़ा बड़ा नहीं, इतना बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है। ये आपको ये सब शेयर कर देंगे, आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करो। डॉक्यूमेंट के इसमें डेटा भी है, सब में ये डेटा भी है, इसमें रिपोर्ट भी, एग्जाम्पल भी सब है। आप प्रैक्टिस कर सकती हो, उसको शेयर कर देंगे आपसे जब आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाओगे तो। हाँ सर आज तक की क्लास का आप जितना भी कराओगे ना, वो हाँ। मुझे उसके अकॉर्डिंग क्वेरीज दे देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलें तो इतना मेरे मेरे को मतलब आप जज कर सकते हो कि शिखा ये सब पढ़ लिया तो तुझे आना चाहिए। तो क्वेरी बता दूं मैं आपको, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक का। टॉपिक्स ना, टॉपिक से क्या है हाँ। मैंने इसीलिए टॉपिक आपके लिए आपने कहा था ना, तो टॉपिक बना दिया इसका। ये सारे हम्म, टॉपिक आपके मैंने इसमें रख भी दिया है। ठीक है सर। वो हम्म, पहले कर ले, मुझे पता था आप इसीलिए बोले थे, इसीलिए मैंने कर लिया। चलिए, कोई भी डेटा मिलता है हमारे पास, तो हमें सबसे पहले उसको मॉडल करना होता है, ठीक है। हम्म, तो ये देखिए, मेजर जो है, यहाँ से हम न्यू मेजर यानी जो अपनी कैलकुलेशन है, सम प्लस माइनस डिवाइड, हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे हम्म, मॉडल करना है तो सम, आप जानती हो, लेकिन आई शुड लेट यू, कंट्रोल प्लस से बड़ा दिखेगा आपको, इन और कंट्रोल माइनस से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो कोई भी ले लो आप, फिजिकल या सेल्स है कोई, ये हो गया, ठीक है। हम इसको सम कर सकते हैं, पता नहीं हाइक सही है कि नहीं है, परसेंटेज हाइक। तो ये आपका ऐसे प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। तो ये फॉर्मूला बार होता है, बट और भी होता है उसमें स्टूडियो में। हम चलते हैं, एक जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट डेटा है वो ओपन करते हैं, और आज मॉडलिंग पे आप काम करेंगे, ठीक है। को पायलट जो चैट जीपीटी है ना, माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटिंग विद दी पावर बीआई चैट जीपीटी, तो को पायलट बोलते हैं उसी को। जो चीज़ें आप मैनुअल लिखोगी, दैट गोइंग टू क्रिएट बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। तो वो अभी तो रिक्वायरमेंट बेसिस पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो मैच नहीं करती मॉडल से। सो हम्म। गोइंग टू हेल्प अस, so we should create the manually। न्यू मेजर क्लिक किया, उसमें क्या किया आपने? न्यू मेजर में बस हमें वो फॉर्मूला लिखना होता है, जो प्लस माइनस जो भी करना है वो आप पाएंगे। बस मैंने दिखाया था कहाँ होता है फॉर्मूला बार, डेस्कटॉप पे। अब मैंने डेटा लोड कर लिया है, अब मैं चल रहा हूँ मॉडलिंग पे। ये देखिए, डेटा लोड कर लिया, फिर क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये मेन मॉडलिंग पार्ट है ये, ठीक है। सो लेट मी लोड दैट। और कभी भी आप इस पे काम करेंगी तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हमेशा आप पैरामीटर पे काम करें। कभी भी आप क्या नाम है, डायरेक्टली पावर BI में लिंक न दें। तो इसके लिए क्लिक पैरामीटर, पहला काम। तो बताता हूँ कैसे जाएंगे। पैरामीटर क्रिएट कर लिया। अब मैं थोड़ा क्लोज एंड अप्लाई कर लूँ, दिखाऊँ आपको कैसे क्या करेंगे इसमें। मे बी अवेयर भी हो चाहे नो भी हो, सो आपको हमेशा जाना होगा ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ट्रांसफॉर्म डेटा में 2 ऑप्शन हैं। वन इज एडी, करेक्ट, यहाँ पे 2 ऑप्शन, हाँ 3 ऑप्शन। पहला है
ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा सोर्स सेटिंग और एडिट पैरामीटर। तो पैरामीटर तो हम एडिट वहाँ करेंगे, बट ट्रांसफॉर्म डेटा से जैसे खोलोगे आप विंडो अपीयर हो जाएगा, जो अभी देखा था हमने। डेटा सोर्स सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने डेटा यूज किया है उसको हमें चेंज करना हो तो वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, जस्ट कम हियर एंड चेंज योर डेटा सेट्स। यहाँ पे क्लिक करके वी कैन चेंज द डेटा सेट इफ यू नीड इट। क्लिक हियर, चेंज कर सकते हैं इजिली। ओके, you don't have to go anywhere. But now my first object to go to the transform data. So I'm going to transform the data here. And now I told you always use the parameter. So how would you do that? एक सेकंड थोड़ा सा स्लो, बहुत फास्ट हो गए थे आप। ट्रांसफॉर्म में जाके चेंज डेटा सोर्स ना? हाँ, जैसे कोई रिपोर्ट है, सो डेटा सोर्स सेटिंग्स में यहाँ पे आके उसको चेंज कर सकते हो। और ट्रांसफॉर्म डेटा, यू नो दैट हियर डू द मॉडलिंग एंड ऑल। ओके, ठीक है। अब आते हैं, लेट्स मूव टू दी, you always use the parameter. Why would you use the parameter? Like suppose I am using the local desktop. Tomorrow I'll be on leave. So I send to my colleague that please, you have already filed? He said yes. So please complete this report. But I haven't created the parameter. What person will do? He should come and then click here, then change the link of the report. Or maybe not here. So they come to the advanced editor and then they change this location. Sometimes, you know, copy paste is biggest concern. Some made mistakes. If I remove this comma and person not aware, see, it's giving error. See this token expected this comma. He should invest the time unnecessary here. So to save this, just one thing you have to do: create the parameter by clicking here, manage parameter, and after that, just we can say select this one and paste here. That's it. Paste the link report that you have and pass it. Now suppose मैनेज पैरामीटर से जो लिंक आपने लिया वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, दैट्स इट ना? हाँ, that's it. अब क्या मतलब चेंज टाइप में जाकर या सोर्स में जाकर ही चेंज करोगे ना आप? ये एडिट क्वेरी पे हम आए, यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में, यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज पैरामीटर एंड देन गो एंड चेंज दैट। ठीक है, यहाँ से एडिट पैरामीटर में आके चेंज कर लो। यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं आपको तो इसी पे क्लिक कर लो। फाइनली सोर्स मतलब सब क्या चेंज हुआ इसमें, जो जहां से डेटा हम पिक कर रहे हैं, राइट? हाँ, करेक्ट। ओके, ठीक है। सो अब इस फाइल का पास करना, जैसे कि अच्छा सपोज फॉर एग्जांपल के लिए वी हैव 25 table here, 25 table we created here, and I wanted to change the location. Should I go change in 25 time? Is this a correct way to work? No, I don't think so. So we must create that we can say source link connection string here and then use it. So let's select the data set, come to the source and see what should I going to do. Select the parameter and pass Excel path. Here I see that this is going to pass automatically and close. Sorry, okay. And then you can save your time. Just change the link, how many data set link with automatically going to update. You don't have to do anything. One thing remember, while when we are going to the option, it's a parallel loading, correct? See, option column profiling based 1000 top rows, या column profiling based entire data set. So if you select the parallel loading, so this one is going to, once 1000 rows is loaded, it is going to load and will take a time. But here since I have 700 rows, so it doesn't matter for me. But if you have more than 10,000, 20,000 data, then going to take a time unnecessary. So that reason, keep column based 1000 profiling. Once everything is done, customizing, transformation has been done, then you can change, then automatically Power BI load data on your desktop. Don't worry about that. But minimum here we can say here 1000 row item will be display initial phase to save the time. Okay. So everything is done. Okay, so just I'm guessing everything done, then go close and apply. Yani if you wanted to apply any specific table, apply that, and close if you wanted to close that too. So I've done everything, then I say close and apply. If you wanted to connect with the different sources, so I wanted to connect my data server right now.
So SQL Server. Okay. So let's open the MySQL Server in Studio. In Power BI, biggest concern that I found, which is called amount of data, any volume of data is biggest concern. Otherwise, no one can beat the Power BI. And that going to solving by Microsoft using Fabric, Microsoft Power BI Fabric, Microsoft Fabric. It is going to help you because they are linked with the Power BI with Azure, and they given the pay and use option, so that data largest data model doesn't going to impact anything. Just use the connection and consume the report. Okay, load that. But yeah, it will take a time till March 24. Here I have a data set. Hope we already created this one. Adventure works. Table, pick up any table, doesn't matter. So let's select the server name. Run it and get the answer. Copy it. Come here. And I don't want to use directly. So first I wanted to create the parameter. So always use the parameter. Type server name. See, this is, I know it is taking unnecessary time, but that is going to solve your future problem. So initial phase people give you time, but later they couldn't give the time to, while rework, you never ever get a time to, we can say, work initial phase. So once you start the report, you always try to accommodate everything so that you can save your time. Now, this time I don't want to go to the every time find a server and all. No, just click here. Either you can pass manually to, or you can paste the server name and all like this. But I don't want to. I use a parameter. Why should I pass this? So pass parameter. Select the first, select server name. Second, select the DB name. See, there are two options we have: import and direct query. So have you? I have remember on second days I have given one link to read the direct query import. Have you run that or went through or not? Did you get a chance to look into it? No, sir. No. Okay. So import and direct. Let me just give the simple idea. I want data to be come in my place, and then I can consume the report. Then I use the import. I have a huge amount of data. I'm unable to use import because it's going to take a 2 or 3 or 4, or maybe not able to refresh sometime. So that scenario, we are going to use direct query. So I'll give one example. Yesterday I took an interview. So I asked one candidate that what is the difference between import and direct query. So he said that if you have a less amount of data, then use the direct query. If you have a huge amount of data, then use the import. See, all data come into the Power BI. If using import, all data come into the Power BI, create the cache, and then you can consume the report. And in direct query, only going to create the structure in your report, table structure in your report. And whenever your visual going to refresh, then Power BI going to hit your server and get the data. So that is called direct query. Data not available in your report. Only we can say only the structure, table structure in your report. And same concept for live connection 2, which is called DAX analysis services. Okay. So simple, but yeah, don't worry, I'll explain more into it. But yeah, meanwhile, you can understand in basic concept, import is going to pull the all data in your Power BI. Direct query is good only create the layout in your table structure in your Power BI report, and data come whenever visual going to refresh it, then your data is going to display. Okay. Understood? Okay.
या इंपोर्ट में जो है वो स्ट्रक्चर आप कॉपी कर पाओगे पूरा, और डायरेक्ट क्वेरी में ओनली क्वेरी। नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टूड। सपोज लेट मी एक्सप्लेन। सर वो आपने अभी @सर्वर नेम कहाँ पर टाइप किया था, सीक्वल में ना? हाँ, SMS में अच्छा। और भी तरीके बताएंगे, इट्स नॉट जस्ट दिस ओनली। ओके, so let's come to the show you we have. I have already get the video into it, don't worry. So where is the paint, epic paint? ये भी, इसको भी रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, देन इट इज गोइंग टू फिक्स। ओके, सपोज करें मेरे पास 2 बकेट हैं, ठीक है। वेरी लो। ये तो मैंने प्रीमियम लगेगा तब क्यों नहीं चल रहा है, पता नहीं, अभी तो चल रहा था। ठीक है, छोड़िए, नहीं चला, नहीं चला। ब्लैंक स्क्रीन क्यों नहीं आ रही इसकी? छोड़ो, यहाँ पे पेंट, इसको फिर से देखना पड़ेगा क्या होगा इसमें। ठीक है, सपोज कर मेरे पास 2 यहाँ पे, एक ये सर्वर है मेरा और एक मेरा ये पावर BI है, पी एंड सर्वर। सो मुझे क्या करना है कि जस्ट कॉपी द डेटा, कॉपी कर ले, सॉरी फॉर राइटिंग, कॉपी कर लिया, ला के मैंने यहाँ पेस्ट करा, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट हमने क्या किया, सर्वर से डेटा उठाया और इम्पोर्ट कर लिया, तो इम्पोर्ट हो गया। मेरे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है विच इज कॉल्ड, मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी है, आई एम नॉट एबल टू कॉपी इट ऑल डेटा इन माई पावर BI। सो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया पावर BI में, टेबल स्ट्रक्चर जैसे बना लिया, टेबल रो कॉलम बना लिया, स्ट्रक्चर सेव कर लिया। मैंने कहा जब भी मेरा ये विजुअल रन करेगा तो ये यहाँ से आएगा एंड दैट गोइंग टू पॉपुलेट द रिपोर्ट विच इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेरी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी बताना, वो समझ में आ गई कि सर्वर से कॉपी किया और पेस्ट किया, दैट इज इम्पोर्ट। हाँ, और डायरेक्ट क्वेरी में क्या किया, डायरेक्टली वो पिक कर रहा है ना सर्वर से। हाँ, फ्रॉम सर्वर, करेक्ट। डेटा नहीं है यहाँ पे, ओनली टेबल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, ये चल, अगर सॉरी, डेटा हो तो, हाँ, अगर डेटा हो तो इस केस में डेटा, तब वो डेटा होगा नहीं यहाँ पे। डायरेक्ट क्वेरी में ऐसे ऑप्शंस नहीं होते। डायरेक्ट क्वेरी इज गोइंग टू वर्क विद द यूजिंग सर्वर, डायरेक्टली सर्वर से डेटा लेता है। ओके, इट इज नॉट गोइंग टू पिक अप। ओके, so meanwhile I'm going to use direct query. Okay, so let's connect that. I did not write any query, just directly I'm going to connect the server, and this is called import. Successfully loaded one table here too. Okay, now I have a flat files, I have a different sources, so still I can connect with that. So I have an analysis server, like sometime company create their own reporting server, which will analysis service, like we have a huge amount of data and I want to create a server like this, which is called
एनालिसिस सर्वर, तो ये सेपरेटली होता है, बट मैंने एग्जांपल के लिए इसको ऐसे बना रखा है सो दैट आई कैन शो यू डेटा वेयरहाउस की तरह कॉन्सेप्ट होता है ये। सो फैक्ट एंड डायमेंशंस अलग कर लेते हैं सो दैट वी कैन सेव योर टाइम। सो दैट इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस। डिम एंड फैक्ट अलग। देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेयरहाउस एंड database? Live database has the tables name, where warehouse has the, see, dimension and fact. See the dimension and fact. So all fact has the numeric values and keys, and all dimension has the we can say categories and specific criteria that we data divided to, that going to divide the data as per the category. Example, student name and student number. So student ID in your dim student name with student ID also appear in the dim student table, and dim fact is going to cover the student ranks and all by using student key. Same concept. So but keys इसमें सब में होंगी and that going to use by dim. So ये dim difference है. This is called Snowflake schema. तो yeah. अब आते हैं, इफ आई डोंट नो हाउ टू राइट द एसक्यूएल देन गो हियर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी एंड कॉपी हियर टू दिस फाइल. Manually you can do that as well. Okay, so now this time I don't have analysis server. सर ये आपने सर्वर नेम मतलब ऐसे क्यों लिखा हुआ है वहाँ पे सीक्वल में? ये फॉर्मूला एसक्यूएल क्वेरी है ये एक्चुअली। आई बाकी तो ब्लैंक है, सिलेक्ट एट, वो सर्वर नेम ही बता रहा है बस, दैट्स इट ना। तो सर्वर नेम आई एम लुकिंग फॉर। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक। I was looking for the server name. See this is server name. See this. ठीक है। तो अगर कभी आपको कॉपी करना हो तो you can do that. Okay. Next, I wanted to connect with the different sources. So I have too many sources. Let me connect with that. Okay, one by one. Document, Power BI. Then we have the new and HTML. See, Excel. Even you can create the Power BI too. So many file will let copy this link. Simple. Just go to the text and this one. Copy this one and this. Paste this one. That's it. It will going to appear in your report automatically. See this. One by one it's going to load. Okay. This is the notepad. Now I wanted to connect with any wave, so I can do that as well. Okay, so anyway we can pick up that. Let's pick up the YouTube. I don't know what option will appear, but yeah, it will work. Anonymous, yes, connect with us. It's open source, no credentials required, but yeah, it is going to consider a huge amount of the data. See this. Oh, please update your browser. Your browser doesn't support update YouTube experience. It doesn't support that. Okay, so we need to update this one. I think it will work with this not the that I have. क्या कर रहे हो सर आप? ये मैंने वेब पे कनेक्ट किया, नहीं देखा आपने? नहीं सर, ठीक है, ये किसी भी वेबसाइट की URL डाल दो, इट विल गोइंग टू कनेक्ट। ओके ओके, हाँ ठीक है। ये तो सर जब डैशबोर्ड बनाते होंगे तभी यूज होता होगा इसका, तो कहीं ना कहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे वेबसाइट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे? कभी ऐसा लिंक दे दिया उन्होंने, क्लाइंट ने एक लिंक दे दिया कि रिपोर्ट बना के दे दो मुझे इसका, तो क्या करेंगे? अच्छा, हाँ, ये कोई नियम थोड़ी है कि हमें कुछ नहीं, क्या मिलेगा हम खुद नहीं जानते बनाने के लिए। नेक्स्ट हो गया, कोई भी सोर्स, जो भी यहाँ पे सोर्स आप ट्राई करिएगा, फ्लैट फाइल जो भी हो, ठीक है, सारे सोर्सेज हैं, आप ट्राई करो। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो लेट मी नो, आई हेल्प इट आउट, गेट इट आउट ऑफ दिस। ठीक है, जो मेजर है वो कवर करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे होगा वेब बता दिया मैंने, शेयर पॉइंट हो गया, और डेटाबेस फीड, थोड़ा शेयर पॉइंट में ट्रिक है तो मैं आपको बताऊंगा जब वो आएंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे वीडियो, ये मेरे स्टेप्स हो गए जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड मॉड। आप ऐसे डेटा लोड करना, ये फर्स्ट ऑप्शन से
टेस्ट करना अपने अगर आपको कुछ भी लगता है जॉट डाउन योर क्वेश्चन, लेट मी नो, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, इवन इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ऑल सेलेक्ट के लिए कैटेगरी फाइल यानी फोल्डर हो गया। अब सपोज कि मेरे पास 25 एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल फाइल तो मैं क्या करूँगा, उसको एक एक करके कनेक्ट करूँगा 25 टाइम नहीं, सीधे फोल्डर में डाल के कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ है, आपको पीडीएफ डेटा निकालने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट अगर आपको किसी को देना है तो 2 सेकंड डेटा निकाल के पीडीएफ से दे सकते हो आप। शेयर पॉइंट हो गया। परक्यूट तो मुझे भी नहीं पता क्या है, मैंने यूज़ नहीं। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम परक्यूट डॉक्यूमेंट मैंने यूज़ नहीं किया कभी इसको। एक तरह का शेयर पॉइंट ही है जहाँ से डेटा में भी डेटा मैनेजमेंट का काम करता है ये। डेटाबेस सर्वर बता दिया आपको। एमएस एक्सेस वो भी बता देंगे, मेरे पास है ऑलरेडी। एसक्यूएल सर्विसेज नहीं है, ओरेकल, ये सब डीबी, ये डेटाबेस है। सेम कॉन्सेप्ट सब में कनेक्ट करने का, कुछ अलग नहीं है कहीं पे भी, एक ही है। देन माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, ये आपको हम बताएंगे, हमारे पास ऑलरेडी है, ये प्रॉपर पढ़ेंगे इसको। पावर प्लेटफॉर्म, ये भी इसमें पढ़ेंगे। अज्योर में कनेक्शन बताएंगे आपको कैसे कनेक्ट करते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आते हैं यहाँ पे, सब ऑनलाइन सर्विसेज है, जैसे अज्योर हो गया, क्लाउड हो गया, AWS हो गया, डायनामिक 365। इवन जो ईमेल आती है एक्सचेंज की, दैट गोइंग टू कनेक्ट डायरेक्टली। आई विल शो एग्जांपल, आई हैव अ वीडियो टू, सो यू कैन यूज दैट। ऑफिस 3 लेगेसी, whatever legacy is going to do, it mean is going to remove from the legacy means it going to disappear shortly, but we are not sure when. And Salesforce object, so this kind of source. Okay, overall it is called source. What would you say? Source. Remember, whenever go for interview, if someone asks what is the difference between source and connection type, so connection type is I have a 4 type of connections: live connection, import, live and import, and also we have the direct query. 3 type of live, import, direct query, and fourth है? fourth is dual connection mode. अच्छा, अभी हमने डिस्कस नहीं किया वो ना, Discuss इंपोर्ट नहीं और डायरेक्ट क्वेरी डिस्कस किया, लाइव भी डिस्कस नहीं किया अभी, उसका सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, फिर अदर्स पे आते हैं, तो ये सारे सोर्स हैं। ये सारे सोर्स हैं जो आपको कभी जरूरत पड़ सकती है। और ODBC इसमें जो मेन आपको फोकस करना है वो है डेटाबेस। SQL मिलेगा चाहे ओरेकल मिलेगा, तो वो है यहाँ पे। या आपको काफका एक नया आया है, तो मतलब काफका है तो सी डेटा से कनेक्ट होगा। बस अब इतना जान लो, कुछ नहीं करना। ये वाला सी डेटा, ये किसी भी क्लाउड को, किसी भी कोई भी क्लाउड हो, सबको ये परमिशन देता है कनेक्ट करने के लिए। सी डेटा, अगर जब आपको कोई भी कनेक्शन टाइप ना मिले आपको, तो सी डेटा पे चले जाना, इंस्टॉल करना, ये चल जाएगा आपको। अभी तक तो फ्री है, आगे का पता नहीं। तो सी डेटा जो है, सी डेटा कनेक्ट कोई भी क्लाउड हो उससे कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इवन डेटाबेस से प्रोवाइड करता है, स्कूल से सबसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कुछ कंपनियां हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपना गेटवे इंस्टॉल कर सकें, तो वो सी डेटा से कनेक्ट करती हैं, कहती भाई अपना यूज़ करो डेटा, हम मैनेजमेंट हम देख लेंगे, बाकी बस आप क्या नाम, हमारा प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, वहाँ सबसे कनेक्ट हो जाएगा हमारा, बस आप नेम दे देना, चेक कनेक्ट हो जाएगा। सोल्यूशन तरह तरह के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं, तो इनका क्या बोलते हैं, सोर्सेज। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, अब जैसे ही हमने सारा काम कर लिया, देन वी वांटेड टू वी कैन से क्लोज एंड अप्लाई। देन क्लोज एंड अप्लाई, हमने सारा कनेक्शन कर लिया है। कोई भी डाउट होगा तो लेट मी नो, लेट लोड दैट। ठीक है, नाउ सेव इट। ये बस डेटा मॉडल के लिए है, डेटा मॉडल ये रहेगा तो आपको काम करेगा। जिसको मॉडलिंग आई थी उसको डैश, यू डोंट नीड द डैक्स, मतलब नीड है बट उतना नहीं। आते हैं यहाँ पे अगेन सेकेंड, अब हम मॉडलिंग करते हैं। सो आई डोंट वांट टू स्विच दिस, ये ऑप्शन से जब आप राइट क्लिक करेंगे, so we have copy and paste option. Once copy it, you can paste it too if you need that. Okay, simple, you can paste that, but I don't want to paste. Let's delete this one. So you can, we have option which is called delete. You can delete too if you copy paste, then delete that. Okay, but make sure do not delete without any reason. सर एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर ये वीडियो लिंक अपने आप, मतलब आपने क्या न्यू सोर्स पे क्लिक किया, वहाँ पर आपने रीनेम कर दिया, राइट? वीडियो लिंक, हाँ, यहाँ पे रीनेम कर लो, क्या हो गया इसमें? नहीं
वो ठीक है। ये हाँ आपने मतलब अच्छा ये टेबल है राइट, दैट इज हाँ टेबल ना। टेबल ना, हाँ टेबल न्यू है टेबल हाँ। करके और वहां पे रीनेम कर दिया, दैट्स इट। अब ठीक हाँ इसके बाद क्या हुआ कि ये जो रिपोर्ट है मुझे है। रीनेम, यू कैन डू रीनेम हियर टू, मे बी हियर टू, बोथ ऑप्शन वाज देयर। ना ये तो ठीक है, ये तो राइट क्लिक करके हो जाएगा, बस वही हाँ पूछ रही थी कि टेबल है या कुछ और है ये। coming all option one by one, so I'll let you know. Okay, after that we have enable load. Okay, and including refresh, there are two options very important here, so we'll discuss. Yeah, let's duplicate part. So here you can do the duplicate and reference. This is also logical, and you can create your own groups here, like create the folder and pass it the exclusive folder. You can save, we can say arrange your table as per your needs. Like I wanted to arrange the all parameter in one folder, so I wanted to create one group which is called name parameters. Okay, create that, and I don't want to just move to the parameter, all parameter to the move where. Yeah, obviously arrangement is required, and this one I don't want to. I want to move to the other. So other two. Else you can create your own query. So you can arrange it too if you need it. You just apply that. Okay. Either click here to. सर एक सेकंड, ये जरा एक बार क्लिक करना, फाइनेंशियल और पर्सनल पर्सन एड्रेस पे दोनों को अगर क्लिक करेंगे तो ही ग्रुप बनेगा ना। नहीं ऐसा राइट नहीं है. क्लिक। Click अच्छा here. एक सिंगल। अच्छा क्लिक किया, ओके। You can create any. Doesn't matter. Okay. ओके। So we can arrange that. Like suppose we have a 25, 35, 65 tables. I'm hardly work 100 tables work, 100 plus table I work. So in that scenario, we need to create the folder each respective categories, and then you can arrange your data. Okay. So now we have created the category successful. And see, I don't want to see this one, the two table and the desktop. So what should I do? But I want it should be refreshed every day on time. So what I'm going to check enable load, uncheck it. So person address and enable load. I wanted to enable load. So it should not appear on the desktop. I'll show you how. See the now how to identify that. See little bit tax is we can say italic. Maybe italic is little bit what should I say? Going to change तो italic. दो Yeah. मिनट में 5 मिनट का ब्रेक दोगे एक्चुअली, हाँ please ले लो. उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। Hmm. बजट अगर कितना है? तो साफ सफाई से फोटो में वो कर हम क्या करें? फिर किस बात का?
Yes, sir. Continue now. Hello. No, darling. Can we start, Shikha? Yes, sir. मैंने आपको बोला था अभी, आप पता नहीं अवेलेबल नहीं, नहीं थे। बाहर वो Yes. चला गया था उधर. Okay. अच्छा. Yes, we can continue. Okay, so here I have a three, we can say three model or maybe three table, you can say that. Model and table is same. So I want two should not be appear on the Power BI desktop here. So what should I do? Let enable it first, then we'll go for the disable. So just enable load, but I want it should be refresh. Sometime what happened, like we need the two tables and merge together and create one table. So in that scenario, we can do that. So if I want to close and apply, maybe just apply it and see what happens. See this three data model and three tables is up here, but I don't want to display two more. I want to display only financial. So just right click, but I want it should be refreshed every day. So then do not uncheck this one. Remember, first uncheck this one, then uncheck this one. Otherwise, you will not able to do that. So I'm going to uncheck this one, which is called enable load. And now, sorry, if I wanted to uncheck this one, not possible right now. Why? Because it disappear. So it will going to refresh. It will not going to appear as a data set in the desktop. Sorry. See this. Okay, got it? What I'm trying to say? Now, once again, the portal. Enable load. Now, second situation, which is called reference and duplicate. So I'm going to do the duplicate here. See what happened? It is going to just create the duplicate. So it means database table are same. They are using same database connection. But if I'm going to create the reference, which is this, see what happened. We don't have a source here. What is the source? It's going to use personal address. See the here. Source would be Hello. yes, 1 second. So see this here. अनेबल करने से सर क्या हुआ? आपने लास्ट टाइम जो बताया मुझे कि मैंने अनेबल किया. I'll come to you. Okay. So I told you that I don't want to see the two more table here. I want you to see only one table, two table. Then whatever I need, I can disable that if I need that. Okay. Situation. I just want this table to be in to add some information, merge in different table. So in that scenario, we use it. Once we can explore more, then you can understand. Okay. Let's talk about the personal address. So there are two type option we have. One is reference. One is the duplicate. Duplicate is going to ping your data for the main source like this. See this. It's going to ping to the main source. But if you create the reference, so it's going to ping to your data source, data set only. So this is called reference. You can check later. Understand. Reference and duplicate. Okay. अच्छा, मतलब ये टेबल उससे रेफर कर रही है, तभी आपने रेफरेंस दिया. राइट क्लिक करके है ना इसमें ऑप्शन रेफरेंस का. और भी ऑप्शन है. ठीक है. यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी आप हो सकता है.
सर एक मिनट राइट क्लिक करना है यहाँ पर किसी पे, हाँ पर्सन एड्रेस पे, ओके वो तो रिफ्रेश है, दैट इज रिफ्रेश नॉट रेफरेंस। Reference, REFERENC, अच्छा अच्छा REFE, सर हाँ गॉट योर पॉइंट। एक और चीज बताओ कि रिफ्रेश का ऑप्शन हम ऊपर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी, इंक्लूड इन हाँ रिपोर्ट रिफ्रेश, कहीं से भी कर सकते हैं ना। वैसे भी कर सकते हैं जहाँ से भी। अगर हम ये अनचेक कर देंगे अनेबल लोड, तो मुझे यहाँ पर जो टेबल है वो नहीं विजिबल होगी। नहीं, यहाँ पे विजिबल होगी बट यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। तो यहाँ विजिबल होने का क्या पर्पज है? यहाँ पर विजिबल होने का यही पर्पज है ना कि Obviously, ये वाली टेबल हम यूज कर चुके हैं। I'll let you know when situation appear. Like, let's give you an example. I exported two table. Okay, one have, we can say all information, but we have a different table where we student name and IDs, and IDs coming into my table but don't have a name. So what would you do? And this data coming from the Excel, and other data is coming from the we can say source, means database don't have the student name. What should I do? Should I say that I'm not able to give the name of candidate, I shall give the employee ID or a student ID? No, you should say it's possible. So what we do, you should load the database and Excel both together and just merge it out together and hide the student table, so that only one table is appear in the desktop, second does not. Okay, that's the purpose of it. हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की लिस्ट में नेम नहीं है, so we need the name to display the report. So in that scenario, we have different sources where we created the list of people, just link with it and merge together. So, and difference, and what is the use of duplicate and a reference. So reference, like suppose I want to modify data by, but source should be always one, not all. So then I can use this. I'll show you why I'm saying this one. So this is the all option that we have. I let you can test it your in, read it, understand, and could try that. Let me know if you have problem. Okay. So let's moving to the creating new group, and group call. Just move it to. I'm keeping as it is so that you can, whenever you get a chance, to look into it. Okay. Try it your own self. Now, this is the fourth group, which is called data modeling. And I don't want to, this any table I don't want to show on my desktop. So just uncheck everything. I don't want to display. Check that. Now data modeling. This time I wanted to move to the data modeling. Other query university. I told you that it is allowed, Power BI allow you to create the duplicate and copy. See what is the benefit of it. Now I'm going to create the reference only. I don't want to create the duplicate. And I wanted to give name as a segment table. Instead of creating the data is going to Power BI, this data model, this table is going to ping financial data to please give me data. And if any changes happen in financial table, automatically appear here too. Let's see the example. I wanted to change none as a replace with the Z. See what happened. I replace with the J. See this. Automatically modification has been done. I wanted to restore it. So just replace, delete this step. Now restore successfully. I restore here too. So that's best. Whatever I wanted to do, I can do that. But one thing, remember, bad point is that, good point, I told you bad point. If everything is done and you
modified any table, delete any table, that going to impact this table too. So make sure whatever you're doing, think about, then you can do. Okay. Now I want, this time I wanted to create my own data warehouse, we can say modeling. So to this, I wanted to create the segment table, which is this, and separately I don't want to link with it. And so to this, what should I do? I need to remove everything from it except this one. So select this, maybe also another way, but yeah. So okay, let me explain option 2. So parameter, refresh, property. I want that name to be changed in data set. So select that. I can change the data set name too. If you wanted to give any description for the futures, you can give it to here as well. Advanced query editor. Remember here only change the source name, this part only. Nothing you should change here. I would say don't change until it's needed. Okay. Don't change anything. Manage. I already told you delete duplicate reference. I already explained that. Choose column. We have 700 column and I wanted to go to any respective column. Instead of moving manually searching, we can select here column and go directly. Okay. Another way, which is called choose column. If you wanted to choose, if you want to remove the column from here, you can do that as well. I don't want to see the segment column. What should appear? See, it disappear too. Choose. Yeah, check that. Okay, next, remove column, remove other column. If you wanted to remove, keeping this segment column, apart from them, you want to remove all column, then which option going to choose? Remove other columns. Instead of going to delete the manually each column, you can delete in a single time. See, one thing, remember, whatever action going to take, okay, that will appear here. But I wanted to restore it. Why? Because this was directly linked with this. So I would going to work here in this model only, not that model. Okay. So select here. I wanted to remove the only segment column, then I click segment. If you wanted to remove other column, so I can select country, remove other column too. So I can do that too. I just restore this one. Again, I'm going to explain. Just reference it. Okay, and the main source should be finance table. And if you are going to ask for the data, so see, source should be finance. They get data from the financial. Whatever modeling you want to do, go ahead and do it here. And it has too many flexibilities as well. Okay, so this time this time I wanted to remove the apart from the segment column. So remove everything. I wanted to remove the duplicate from this segment column. So say this. We have removed duplicate, and now it's coming 1, 2, 3, 4, 5 categories only. So we have a lot of line item, but now change to the 5 only. And I wanted to give the number 2 so that I have a dynamic keys. So to this, add column, we have index column. Start from 0, start from 1. If I wanted to do custom, so I wanted to give the custom 100, and increase should be 1. This one, okay. And I wanted to give this segment ID. Segment ID. Usually ID in first column, so you can move it to. If you wanted to move, here option which is called move. You can say left, right, beginning, in. So I just did the manually so that I can save my time. So this is the first we can dimension segment dim. So you can change the name here. Dim segment. Dimension, which is called next. Going to again duplicate and maybe reference, but best part is reference. Next, I wanted to create the country. And it will be dynamic too, automatically going to appear. So same way I'm going to do that. Stop me if you don't understand, okay? Then remove, duplicate, give the sequence. Now first time I give in the 100, this time I want to give the 200 and increasing by 1. Okay.
I wanted to give the current segment. Oh, sorry, I said the segment. The wrong column is selected. Wanted to select the remove other column, remove duplicate. I wanted to give the custom. First I'm given 100. This time I wanted to give the 200, increase by 1. And I wanted to give the country ID, copy and paste, type country ID so that I can save time. Go to, move to the beginning. Next we have reference. So same steps for other columns too. Okay, so you can try it your end. I'm just giving the product, dim product. Any doubts? Or if we do it in your end, next session, let me know. If you ever get any problems, I'm going quickly. I'll do that. Okay. So basically आप ना ऐड कर रहे हो कॉलम इंडेक्सिंग के साथ, राइट? कॉलम भी ऐड करने साथ में गिविंग आईडीज टू. ओके. Why I'm doing this? Any idea? मॉडल बनाना है. No, I told you the reason, but you didn't hear. I think so don't hear me. Wow, if we're creating any table, we need IDs to make with the respective table. So that's Okay. when I'm giving this one. Okay. For relationship perspective. Obviously. Now I wanted to create my fact table. So fact table has the almost key IDs. So let's create the reference here. And this time I don't want to share. Yeah, I don't want to show on the desktop so that if any changes made here, that will impact any table. So that reason I don't want to fact financial. Fact financials, and see whatever column I have, why should I give the name? I can give the keys only. Keys is going to help me. So to this, which we have many options here. So like sequencing, split the column, then group by. If you wanted to group anything, you could do that too. Then your data type, and this one example I'll give it to you one by one. Now, do you understand what is the mean of merge query and merge query as a new? And okay, what is the difference between merge and append? Do you have any idea? Sorry, difference between merge and Append. सर मर्ज जो होता है वो तो बेसिकली दो क्वेरीज को मर्ज करता है. So what, like suppose we have two columns in one table. Second table have a two column. So how many column is going to add in merge, and how many column going to add in append? I think merge each table has two. append तो हाँ, append तो क्या करता है कि वो पूरा डेटा append करता है साथ में, और merge के अंदर सॉरी मैंने अपोजिट बोला. मर्ज आपका काम करता है ज्वाइन की तरह. जैसे ज्वाइन में होता है ना कि जैसे इनर ज्वाइन है आपका, या दो जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो साथ में मैच. पहले मर्ज की बात करते हैं. मर्ज बताओ आप मुझे क्या है. मेरे पास दो टेबल हैं, टेबल 1 and टेबल 2. Okay, so here is a 2 column into 2 rows. Here 2 column into 2 rows. Result क्या होगा? कॉलम कितने होंगे, रोज कितने होंगे? सिंपल आंसर. एनी आइडिया? 2 columns and 2 rows ना दोनों में. And what about the append? No idea. Correct? अभी ध्यान नहीं है सर, बट यूज किया हुआ है ये. No, if you use it, then definitely should remember. Okay, merge. We have a 2 table. Both have 2 rows and 2 column. If you're going to merge that, so column would be 4 and rows will be 2. Okay?
Understand? Like suppose Mhm. table this. So merge is going to add the new column. Okay. And if you are talking about the append, so append we can rarely happen, but yeah, if your additional column doesn't matter. So let's talk about the append prospect. Append is going to add more data in the rows. So like we have the append, 2 2 into 2. So column will be 2 and rows will be 4. Okay. Understood now or should I explain once again? एक सेकंड, आपने बोला कि मर्ज के अंदर भी आपके कॉलम, जैसे 2 कॉलम और 2 रोज हैं, राइट? तो मर्ज में भी हमारा 2 कॉलम और 2 रोज ही रहेंगे। हाँ ऑब्वियसली नहीं, भूल गए आप फिर से। मर्ज 2 into 2 है, करेक्ट? तो So 4 हो जाएंगे। add the column here in merge. Okay. So the column will be 4 and rows will be 2. ओके। क्यों? क्योंकि जब हम मर्ज करें तो कॉलम ऐड होंगे उसमें, और अपेंड में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होंगी, सीधा सीधा। अच्छा, ओके, अपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के। हम्म मर्ज में आपका बेसिकली कॉलम इंक्रीज होंगे और अपेंड में आपका रोज इंक्रीज होंगे। ठीक है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पार्ट। जॉइन डिफर है ना इनसे? Join is different thing. I'm talking हाँ, append. Okay. ठीक So है। I want to merge it. Okay. So ये see दे what रखा happens. है कहीं पर, पावर बीआई में भी ऑप्शन होता है जॉइन का? Without join not possible. I'll come to this to point. I'm coming this year. So let's हाँ, come to modeling. If you done the modeling, so this also include the relationship too. So for relationship purpose, I'm doing this one. Okay. So now we have fact. So we have a dim and fact. I don't want to see the segment and country and product name in, because we have the different table. So I need a keys for it in this table. So since we do not have, so we need to, how should I have that? So I'm going to use merge as a query in fact table. So see, merge query. This I wanted to connect the dim country. So country name and country name are same, exactly matching 300 rows. And you ask me the join. So we have left join, right outer join, full join, inner join, left join, right empty join. मर्ज विद जॉइन हो गया ना, लेकिन ये तो So without join, how should it possible to link with the table? So we need to actual data is required. So we need to link this. हाँ। Any idea with the left, right, full inner join, left empty join, and right empty join? Any idea? इनर जॉइन जो होता है, जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे मैच होते हैं, राइट? जैसे मेरे पास लेफ्ट टेबल में 3 रिकॉर्ड्स हैं और राइट में मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, बट उन दोनों में जो मैच हो रहे होंगे दैट इज द इनर जॉइन। लेफ्ट में हो जाएगा जो सिर्फ लेफ्ट का डेटा है, लेफ्ट में अगर 5 रोज हैं तो वो लेफ्ट का सारा डेटा पिक करेगा विद द मैचिंग ऑफ राइट, और राइट में राइट का सारा डेटा पिक करेगा विद द मैचिंग ऑफ लेफ्ट, और फुल में आपका सारे के सारे डेटा आएगा, चाहे वो लेफ्ट में है या नहीं है, राइट में है या नहीं है, ऑल डेटा इट विल बी कम टुगेदर इन द फुल जॉइन। एंटी एंटी भी तो है। यहाँ पे देखिए आप, एंटी भी है, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। ये नहीं पढ़ा मैंने कभी सर। आउटर मुझे पता है, फुल आउटर और आउटर लेफ्ट है, आउटर। आउटर में 2 कैटेगरी है। अच्छा, एंटी तो कभी सीक्वल में भी नहीं आया और ना ही कभी टेबल में हमने देखा। डब्ल्यू में तो है नहीं, सीधा वहाँ पे तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। Basically, it has only we can say 4 only, okay, but they are the requirement based the feedback of the customer, they move that. You have understanding. You should not take more time.
Understand. See, inner join, only we get the common data, both table as a link and give the common. See, some situation come where customers say, I need only those rows which information available in this table only. I don't want to additional information. Then use the inner join. Like that, I don't want to blank. I want to see the blank. So in that scenario, you can use inner join. It will going to help you. Full join doesn't matter, all data needed. Left join, left complete data, right only limited data that the match with the left side, and right full, left only those rows matching. NT join is additional thing. So NT non-matching rows. So left NT, right NT. Like suppose in Power BI some situation, I wanted to include those data, that data non-matching. So maybe left 20 and right is just opposite for the two right outer and a left outer. Opposite this, okay? Inner you well about that. This one you knew it. This one all four must have been. This one just opposite for the left outer and right outer. NT. NT means the those rows is not matching on the table. That rows is appear. Okay. So right now I'm going to the left outer because I want left table should be all data, and sorry, right table left full data and right side complete data, array matching data. So it is matching. See, result is appear exactly same. And now see, once I merge that, see merge query appear here, and see what happened. It is going to add the table. I wanted to expand this one. Stop me, you don't understand, okay? So country match that, eh? Country IDs appear now. I don't want to see the country name here. So I just select that and delete this one. Understood now how did I achieve that? And I'm going to repeat that. Okay. जो रिकॉर्ड्स मैचिंग नहीं होते वो हमारे एंटी हो गए, राइट? प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ले लेते हैं. By default, so by 95% it is going to pick up automatically. You don't have to do anything. Okay. Product. One thing, if you use original column prefix, then see what happens. See dim dot product I give the table name and as well as the column name too, but I don't want to see the column name. I just wanted to see the product name. So just remove prefix. Let's give the product name. I remove the product name also. Now I don't want to see the segment also. So let's do that. So merge query and we have a dim segment, correct? Select this one segment, automatically match and expand this one. Any doubt that how should I am doing it? Any doubt? So I'll once again I do it for you. Understood now? सर एक बार मर्ज दोबारा बताओ, मर्ज एक बार दोबारा बताओ मुझे ना. नहीं वो क्वेरी मतलब थियोरेटिकल नहीं चाहिए मुझे, यही प्रैक्टिकली जो आप अभी कर रहे हो ना वही बताओ एक बार. चलो ठीक है, दोबारा बताते हैं. कुछ नहीं है, सिंपल है. ये सेगमेंट है. इंस्टेड ऑफ सेगमेंट नेम I wanted to add this segment ID, and here I have a segment name and segment ID. So see what happened in database prospect. See here too, I'll show you. See the dim account, why they create account and keys on. See this table if we create here, in fact see this, how many line item they have. See that. So to create the just create the categories here and save the time, save the space as well. String, you know, string going to 250 byte, but it is going to take lesser integer, going to less time and less, we can say, effort and less space too. So we create the ID. If I create the ID in this table, so we don't have to display the name also, correct? ID is going first. So to this, going to the merge query, and I want link the segment table. Since we cannot connect the ID because we don't have ID, we have a name to connect this one name. Okay, exactly matching. Okay,
and that's it. सर एक सेकंड आप क्या कर रहे हो? सेगमेंट पे आपने क्लिक किया राइट क्लिक करके या फिर यहाँ से जाकर मर्ज पे क्लिक किया? मर्ज पे क्लिक करो, यहाँ पे दो ऑप्शन है, मर्ज, मर्ज इज ए न्यू। सो फॉर हाँ क्लिक किया, बस स्टेप्स फॉलो कर लो। हाँ लेट एक्सप्लेन दैट and check, because segment name already we have in the report. I don't know segment ID will be needed, and delete this one. See why I'm creating here, because I'm just going to train you. Otherwise, you in fact table never see the we can say any dimension information. Just see the keys only. Can I take a control of your screen once? You can do it. We have it. You can do it yourself. Next session we can do that. What is the control is needed? अच्छा मैं एक बार वैसे करके You देखना can चाह try रही it your हूँ in your laptop, and I'm not going to anyway. Ask next time, okay? Just see this. अच्छा ठीक So after that, we have created that. Now see this segment, product, country, this kind of ID we have, and also we have this column too. So this is the call modeling. So now let's we can say hide everything apart from the financial table. Yeah, perfect. So we can appear in the report 1, 2, 3, 4 table is appear in the desktop. Please close and apply. This is called modeling. We have more options too. Doesn't mean that, yeah, many options we have. We'll explore one by one. Perfect. See, now come to the relationship prospect. Power BI. Okay, in here, how would you model that? Any doubt? Whatever I told you. I see. Sikha, I'm going slow because to make you understand. Otherwise, in at least 2 sessions, I'm finished the modeling. Let's you can see that. So here our report view, here our data view. So check the data. What data is coming? So click here, dim product, dim segment, and this is the fact financial, correct? Now come to the model view. You ask me many time, what is the model view? Model view is going to help you to build your relationship, change your data model, categories, everything you can do that here too. Advance. That क्या है यूनिक कॉलम भाई? नहीं, मुझे फीचर टेबल नहीं चाहिए. कैसे डिसाइड करते हैं? यहाँ पे इंपोर्ट मोड है. सी दिस इज इंपोर्ट मोड. सेगमेंट आईडी, सेगमेंट, अच्छा आई थिंक एक्सेल से इसलिए नहीं आ रहा. सॉरी, एक्सेल है, इस वजह से नहीं आ रहा. एक्सेल से नहीं आएगा, ये डेटाबेस से चलता है. एक्सेल से नहीं, एक्सेल से इंपोर्ट ही रहेगा. कोई डेटाबेस को दिखाएंगे. सो ये देखिए, फर्स्ट आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं. सो हियर हैव बी सेगमेंट, here have a dim, here have a country. Okay, I think I should create one so that it should looks good. Okay, let me do it. Let's create one more duplicate, which is called reference, and this time I wanted to create the Germany Mexico discount brand. So discount, and apart from discount brand, all columns should be removed. Other, remove duplicate and add this sequence which is called 400, so maybe 100, and increase every time 1. And it is a dynamic, it is going to increase automatically the like if you add the 4 yesterday have 10 rows, it is going to increase number automatically, so you don't have to worry about that. Like today we have a 4 4 3, so it is going to add the 4 5 6 7 8 9, same is going to add the 5 and 8. It's a dynamic. So now I have added that.
See, if you count how many tables are there, but how many is appearing here? 1, 2, 3, 4, 5, and 5, 4. 4 was also 4 table also there. The 5, 9 tables should be appear here, but how many is appearing? Only 5 table. 5 tables only, just because we added that. Wow. Semantic model. They added new model here. Every day we got new things here. Semantic model there directly. Wow. Okay. So now here this is called. Hope you have remember what is called if you link this way. The model that have one we can say one fact table which is called Snowflake. correct snowflake schema. This is the benefit. Let me explain direction here. Two important things. One is make active connection and cross filtering option. I want that if I select the country name, then this table to filter, but this table should, 3 tables should not. Okay, then what should I do? Just create the single direction, which is single direction. Okay, if you select the 1 to 1. no One, relation many to 1. many to one, one to one, one to many, and many to many. I'm coming to you, but let's come first the direction filtering. I told you, I want dim can be filtered this one, but fact financial cannot be filtered the dim. Then I use the single direction, which is this icon. If I check this direction this way, so it means that this table is going to filter this one. But this one cannot filter this one. I mean, fact financial cannot filter the dim country. Understood? I want dim country to filter the fact financial, but fact financial cannot filter the dim count. Okay, got it. Let's move next part. I want that both can be filtering. Dim country can filter to the fact financial can filter the dim. Then just use the both direction. That's it. It will going to filter, but how wrong or right, I don't know. It totally depends on data. So you should check your urine is coming correct or not. You should check your data. So this is both direction. Talk about the relationship. Same concept, one to many is it is called any idea? Many to one. First is many to one. So left to right. So left is a full we can say full data, and right side only matching data. So this situation called left join. Right? Yeah. I'm linking to make you understand one to one, which is called inner join. One to many, right join, right side full data, and left side matching data, and many to many full join maybe doesn't care. But yeah, Many to 1 is left join, 1 to 1 is inner join, 1 to many is right join, many to many is full join. perfect. And one thing remember, do not use many to many until unless the worst situation comes. Why? Because this many to many is going to take a lot of space. Your report is सर going to be ये रिलेशनशिप जो आप बता रहे हो हर जगह वही चीज एप्लीकेबल होती होगी चाहे वो सीक्वल हो चाहे डब्ल्यूएल है ना या थोड़ा थोड़ा अलग होता होगा. थोड़ा सा देखिए ये वर्डिंग डिफरेंस, यू हैव डिफरेंट वर्डिंग हियर. So if you not understand one to many, your understanding will going to take a place in some time, not one day. When you test it out, what is what many to one do, one to one to many, many to many. What should the impact of the data that you don't know? But yeah, I make the clear picture for you, so you understood about. Any doubt in the relationship? Cardinality. So Clear. which is called cardinality and filtering. The direction filtering. क्या बोलते हैं इसको? इसमें जो ऑप्शन दे रखा है सिंगल मतलब वन साइडेड बोथ दोनों साइड से वो चीज हो पॉसिबल है. करेक्ट. अब आते हैं यहीं पे एक क्वेश्चन है आपसे, हाउ वाई मेक द एक्टिव रिलेशनशिप. सो लेट अनचेक दिस वन.
The table is dim country. See what happens. See, this is it has a relationship, but it will not work. Okay, so that is called inactive relationship. And why it's needed? Suppose sometime we created one model. We have a 25 we can say tables and different kind of things we have. I want that cross this table and make relationship with that table. Like suppose I wanted to cross to make relationship with this. You just guess it. I'm not saying right now. Just guess it. This one make with this, but this one is growing. This one is not allowed to do that. It's an ambiguity issue. It says it has already relationship. You should not make relationship with cross this one. So to in this situation, we will going to create the inactive relationship, and that going to use in your measure the function called user relationship. So that is going to help you make relationship, and your report will be done. You don't have to modify your complete report. This prospect we need to create the inactive relationship. Okay, Inactive. inactive. Either नहीं समझ ये समझ में नहीं आया ये कि I know that. situation we are going to create the inactive. You created one report. Sorry, this one is not. Epic pen is I don't know what happened, not working. So two table, okay. And apart from that, we have many tables here too. You're about to finish your report and using all table, okay. Now situation says this is a fact tables. It has all relationship with that, okay, or linked. We need to create the relationship together. This one, okay. It's not allowed to do that, and in both direction doesn't allow that. Why? Because it has an ambiguity issue. Select this one, it will move to come back and again come back to here too, because each one is linked together. For example, if this is the fact tables, okay, I created the both side direction in each table, each column, so it is not allowed to make relationship. Active relationship does not possible to do that. So what we will do, we will create the inactive relation, so that should not be impact the relationship. And मीन्स कहने का मतलब यही हुआ कि इनएक्टिव में आप दोनों साइड से पुश ना कर करके सिंगल साइड पुश करोगे. कुछ नहीं करेंगे हम इसमें. Only just create the relationship and that going to pass in the DAX. तो ये ऑप्शन कहाँ है एक्टिव और इनएक्टिव का? वहां तो सिंगल और बोथ ही था सर. ये क्या है? Make this relationship active. Just uncheck this one. अच्छा हाँ, ठीक है. ठीक है. ये सारी चीजें when we started, I remember it took 3 months to learn these things. You never think. When a report comes to prepare, we got problem. Then you realize this option. Then we work for it. I created the report where Lenovo report where the अभी भी मुझे प्रैक्टिकल टर्म में नहीं समझ में आया ये वाला चीज. प्रैक्टिकल टर्म में बताओ कि इनएक्टिव करने से क्या होगा और एक्टिव करने से क्या होगा. एक्टिव से आप got it. Let's prepare this one, and I wanted to use the country name and change the slicing. Okay. Say this. I wanted to see only one country data. Let's pass the column name also. Country ID, country name. एक मिनट.
let's select the country. Okay, and this is done. Okay, so we have country name, this kind of option. Okay, I want that France, whenever I select one country, then a report will be appear. If I don't select anything, it will display all. But now situation says that I wanted to create the inactive relationship. See what happened. Come here, select country and say this. If I select, it doesn't impact anything. This is called inactive relationship. Okay, Hmm. it has a relationship. See, it has a relationship, but it won't be appear. Why? Because we have deactivated this. If I wanted to active this one, so I'll do that. Let me show you. Major. So use calculate. Okay, I wanted to see distinct, or maybe see sum of sale. Sum of sale by cells and user relationship. I wanted to pass the column name, which is country ID. So dream country ID and fact financial country ID. And I close that. Okay. Right now, see, it doesn't filter that time, and still doesn't filtering anything. But let's add this major into it. Count of country cells, and then add this. Country. Okay, so see, I've selected the France. Is it working now? So that is the benefit. If it doesn't select, it will disable. But what is the status of relationship? Is inactive. इनएक्टिव के केस में वो काम नहीं करेगा, राइट? नहीं करेगा. Yes, correct. That I'm trying to say. दिखाना है क्या सर? सो यहाँ पे आपको एक बार ट्राई करना अपने इनएक्टिव का. डोंट वरी, इट्स नॉट अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इजी. सो इसका बेनिफिट है कि जो हमें नहीं हो पाएगा, देन वी कैन डू दैट. ओके, सो लेट्स रैप अप. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग. सो यू शुड प्रिपेयर योर ओन सेल्फ. ओके, कुछ फिल्टर लगाया, फॉर एग्जांपल मैं जनरली आपको बता रही हूँ, जैसे आपने कोई फिल्टर लगाया, रीजन सेलेक्ट किया, रीजन में अगर मेरे पास 4 रीजन है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, राइट, और इसमें अगर मैं ईस्ट सेलेक्ट करती हूँ तो अगर वो एक्टिव है तो वो उसका आंसर मतलब अकॉर्डिंग टू ईस्ट देगा, अगर वो इनएक्टिव है तो उसका डेटा नहीं आएगा. करेक्ट, राइट, करेक्ट. यही हुआ ना इनएक्टिव. हाँ हाँ, करेक्ट है. इनएक्टिव का ऑप्शन दिया क्यों है? मतलब वो काम ही ना करे इनएक्टिव, मतलब वो फिल्टर उस पर काम ही ना करे बेसिकली. हाँ, इसीलिए दिया. मैंने बताया तो आपको कि मेरे पास एक 25 पेज की रिपोर्ट थी, एंड उसमें मुझे जो टेबल्स थे, ये सारे टेबल्स मेरे वर्क कर गए. बस अब मुझे ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है. तो एम्बिग्यूटी इशू आएगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि जब इसको फिल्टर करेगा तो ये इसको फिल्टर करेगा, ये सारे इसको फिल्टर करेंगे, यहीं पे आके वो वर्क नहीं करेगा. तो इसके लिए हम इनएक्टिव रिलेशनशिप बना देंगे, और बना के उस मेजर में बना देंगे. मेजर में पास कर दिया मैंने, ला के वैल्यू पास कर दी, मेरा काम हो गया. अब नहीं तो मुझे उस पूरे मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके तो मैं अचीव कर सकता हूँ. टू योर टाइम,
Microsoft given this option. Right. यही है, सुनिए, इफ यू व्हाई कंपनी लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पीपल, रीजन बिहाइंड दैट कि जो रिपोर्ट जब मेरे ऑफिस में व्हेन वी गॉट द क्रूशियल रिपोर्ट इट कम्स टू मी, व्हाई? बिकॉज आई कैन ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई ऑलरेडी वेंट थ्रू दैट, सो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है. बट या इफ यू न्यू वी नीड टू लर्न ऑल्सो, so doesn't mean that I knew everything. No, you should practice it, learn. Okay. Yeah. So you should practice same manner. Okay, and try other options too. Okay, you can say I know it's overloaded and it's overloaded. So if you have any specific question, let me know in whatever I trained you today. And this model in this report, I will continue in next session too, because I know that the things that I given to you is crucial. Okay, one more thing also here. Suppose sometime we have a lot of relationships here, and it's a kind of we can say bunch of the report data model we have, and you're not able to see that what relationship, which relationship from which this not able to show, not sure about that. So then add the tab, export any table here, which table information you're looking for. Click here and add related table, and our respective table is up here. Okay, Okay. which has a direct relationship. सो एग्जाम्पल के अगर मेरे पास 25-26 मॉडल हैं तो रिलेशनशिप उतने ही होंगे. हाउ डू अचीव दैट? तो हम इस वजह से इसको मॉडल कर सकते हैं. यहाँ पे रिलेशनशिप जो करेंगे इट इज गोइंग टू डिस्प्ले हियर. ठीक है. Okay. Next, basics thing. Sometime I wanted to change my relationship, okay, and create a new relationship. So where should I go? So here I have a manage relationship. Click here. You will see the all relationship that we have. Okay. Disable, enable, and check that. Whatever you want, we can do that. And it has a new relationship. You wanted to build a new relationship. Yes, you can do that. Auto deduct, it will going to also auto deduct your relationship, but I would not recommend. You can edit to, select anyone, edit to, and delete. If you want to delete, go ahead and delete to relationship. Okay. So this is called relationship. Any questions, any concerns, please practice it. You have 15 minutes. Please practice it, because I'm closing for the day. But yeah, please practice it, and any opportunity to connect in evening, say maybe 8 to 10, Okay. we stop that. Okay. This will- So आज शाम को